हाँ हेलो फ्रेंड्स। आज हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे क्लास 11 का सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन दिस चैप्टर विल स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सिस्टमैटिक्स की अपनी एक अलग डेफिनेशन है, वो पढ़ेंगे हम बाद में, लेकिन ब्रीफली कहा जाए तो सिस्टमैटिक्स में क्या किया जाता है, सिस्टमैटिक्स में क्या किया जाता है। इन सिस्टमैटिक्स आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन इज डन। सिस्टमैटिक्स में क्या किया जाता है? इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। Systematic is a branch of biology which deals with identification, nomenclature and classification of organisms. So systematics में क्या किया जाता है? सिस्टमैटिक्स में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का किया जाता है आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर किया जाता है एंड क्लासिफिकेशन किया जाता है उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है ना? सो हम इस पे गौर करेंगे पहले आज। व्हाट इज मीन बाय क्लासिफिकेशन? सो व्हाट हैपेंस इन सिस्टमैटिक्स? देयर इज आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर and classification of living organisms is studied. You know that there are vast variety of living organisms. अलग अलग तरह के प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रोब्स है। सो जब कभी भी बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ होती है और अगर हमको उन वैरायटीज़ को या उन अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर हमको अच्छे से पढ़ना है तो दे मस्ट बी क्लासिफाइड। तो उनका क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फॉर कन्वीनियंट स्टडी ऑफ वास्ट वैरायटी ऑफ दिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनका क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। नाउ व्हाट इज मीन बाय क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन किस में स्टडी किया जाता है? सिस्टमैटिक्स में। सो व्हाट इज मीन बाय क्लासिफिकेशन? द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग living organisms into groups and subgroups. The process of dividing living organism. Classification की हम एक simple definition कर सकते हैं। What is classification? Classification क्या है? एक हम simple definition यहाँ पे classification की कर सकते हैं। What is classification? The process of dividing living organisms into groups and subgroups. Is called the process of dividing living organisms into groups and subgroups on the basis of similarities and differences is called classification. So what is classification? The process of dividing living organisms into groups and subgroups. The process of dividing living organisms into their groups and subgroups on the basis of similarities and differences is called classification. सो ये क्लासिफिकेशन किस लिए किया जाता है? फॉर द कन्वीनियंट स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म।
देखो कोई भी मेडिकल शॉप ओनर है, उसकी शॉप में अलग अलग तरह की दवाइयाँ होती है, मेडिसिन होती है, जिनके नाम किसी के नाम ए से, किसी के बी से, किसी के सी डी से शुरू होते हैं। तो वो क्या करता है, इतनी अलग अलग तरह की दवाइयाँ होती है कि वो मतलब उन दवाइयों का क्या करना पड़ता है, उसको क्लासिफिकेशन। वो अपने शॉप में दवाइयाँ अरेंज करके रखता है अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। मतलब जिन मेडिसिन का नाम ए से शुरू है उसका अलग कोना रहेगा, खाना रहेगा। जिनका बी से नाम शुरू हो रहा है उसका अलग कंपार्टमेंट रहेगा। मतलब अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वो दवाइयों को क्लासीफाई करके रखता है, ताकि कोई भी अगर कस्टमर आए तो उसको जो दवाई चाहिए उसे झट से मिलनी चाहिए। इसलिए सो एज देयर आर वास्ट नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गन्स, देयर इज बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गन्स, हमने पहले चैप्टर में देखा था। तो फॉर द कन्वीनियंट स्टडी एज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गन्स, लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गन्स, so for the convenient study of all these vast variety of living organisms, they must be classified. क्लासिफिकेशन में लिविंग ऑर्गन्स के क्या गिराए जाते हैं, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। So classification, the process of dividing living organisms into groups and subgroups on the basis of similarities and differences is called classification. So basically classification means dividing living organisms into their group and subgroups on the basis of similarities and differences. So classification में living organisms के group फॉर्म किए जाते हैं, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। जहाँ तक हिस्ट्री का सवाल है, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन का सवाल है, क्लासिफिकेशन की शुरुआत किया है कार्ल लिनियस ने। क्लासिफिकेशन वाज स्टार्टेड बाय कार्ल लिनियस इन 1735। इन 1735 कार्ल लिनियस स्टार्टेड क्लासिफिकेशन, या इसने पहली बार दो ग्रुप बनाए। कार्ल लिनियस ने पहली बार दो ग्रुप बनाए। एक्चुअली इसके पहले भी क्लासिफिकेशन किया जाता था, लेकिन कार्ल लिनियस ने पहली बार साइंटिफिक बेसिस पे दो ग्रुप बनाए। उन दो ग्रुप का नाम था, कार्ल लिनियस ने क्या किया, कार्ल लिनियस डिवाइडिंग लिविंग organisms into two groups, that is Vegetabilia and Animalia. So in 1735 Carl Linnaeus divided all living organisms into two groups. इसको हम किंगडम भी कह सकते हैं, टू ग्रुप्स। और कार्ल लिनियस डिवाइडेड लिविंग ऑर्गन्स इनटू टू ग्रुप्स। These two groups are called as kingdom। इनको हम किंगडम कह सकते हैं। एक ग्रुप था किसका, वेजिटेबलिया, और दूसरा ग्रुप था एनिमलिया। These groups are nothing but kingdom। So कार्ल लिनियस ने क्या किया, कार्ल लिनियस divided living organisms into two kingdom or two group, that is Vegetabilia and Animalia। Vegetabilia, vegetables, plants, understood। इस ग्रुप में उसने किसको रखा, प्लांट्स को, और इस ग्रुप में सारे एनिमल्स, प्लांट्स के अलावा जो भी लिविंग ऑर्गन्स थे उनको इस ग्रुप में उसने रखा। ठीक है, तो व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हिकल आया, फिर कोपलैंड आया, ऐसा करते करते क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप हुआ। नाउ आज हम यहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, व्हाट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। व्हाट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, व्हाट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। देखो कार्ल लिनियस के बाद कौन आया, कार्ल लिनियस के बाद आया हिकल,
कार्ल लिनियस के बाद हिकल आया, हिकल डिवाइडेड लिविंग ऑर्गन्स इनटू 3 किंगडम, 3 किंगडम बनाए थे, ठीक है ना। उसके बाद आया पोपलैंड डिवाइडेड लिविंग ऑर्गन्स इनटू 4 किंगडम, ठीक है। और पोपलैंड के बाद आया R.H. Whittaker. So this R.H. Whittaker in 1969 divided living organisms into 5 kingdom. यही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम यहाँ देखने वाले हैं। सो रॉबर्ट वाइटेकर वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिवाइडेड लिविंग ऑर्गन्स इनटू 5 किंगडम। 2 किंगडम कॉन्सेप्ट किसने दिया? कार्ल लिनियस ने दिया 2 किंगडम कॉन्सेप्ट, 2 किंगडम। 3 किंगडम कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय हिकल एंड कोपलैंड ने दिया 4 किंगडम कॉन्सेप्ट। कोपलैंड डिवाइडेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 4 किंगडम, ठीक है ना। उसके बाद आया R.H. Whittaker was American ecologist. R.H. Whittaker in 1969 divided living organisms into 5 kingdom. So today we'll study about this 5 kingdom classification of रॉबर्ट वाइटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। सो रॉबर्ट वाइटेकर डिवाइडेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 किंगडम सिस्टम। रॉबर्ट वाइटेकर डिवाइडेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स into 5 kingdom. Which are the 5 kingdom of Robert Whittaker? Robert Harding Whittaker divided living organism in 1969. Divided all living organism into 5 kingdom classification. 5 किंगडम में रॉबर्ट वाइटेकर ने लिविंग ऑर्गन्स को डिवाइड किया। सो विच आर द 5 किंगडम ऑफ रॉबर्ट वाइटेकर? द फर्स्ट किंगडम ऑफ वाइटेकर इज मोनेरा। द सेकंड किंगडम इज प्रोटिस्टा। थर्ड किंगडम इज फंगाई। Fourth kingdom of Whittaker is Plantae, and the 5th kingdom of Whittaker is Animalia. These are the 5 kingdoms of Robert Whittaker. So Robert Harding Whittaker divided living organisms into 5 large kingdoms: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अच्छा, इसके पहले हम एक चार्टन ने किया हुआ क्लासिफिकेशन देखेंगे। अच्छा, अगर हमको किसी भी लिविंग ऑर्गन्स को क्लासीफाई करना है तो सबसे पहले हम किस बेसिस पे उसको क्लासीफाई करेंगे? हम उसको क्लासीफाई करेंगे उसके बेसिक फीचर के बेसिस पे। सो विच इज़ द बेसिक फीचर ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स? हर एक लिविंग ऑर्गन्स में ऐसा कौन सा फीचर है जो हर एक में मौजूद है? विच इज़ द बेसिक फीचर ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स? सो बेसिक फीचर क्या रहेगा सभी लिविंग ऑर्गन्स का? एज यू नो दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। सो सेल इज द बेसिक फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर ये वीडियो अगर बड़ा हो जाता है तो सेकंड वीडियो में मैं ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट करूँगा, ठीक है। देखो, अगर हमको क्लासिफिकेशन की अगर शुरुआत करना है
तो हम क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक फीचर और फंडामेंटल फीचर. And cell is the basic feature of all living organisms. So we can classify living organisms on the basis of cell they have. So first of all we'll see what are the types of cell, कितने तरह के cells है वो देखेंगे. उसके बाद में सेल की बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे देखेंगे. So initially living organisms are classified on the basis of cell और cell on the basis of cell हम क्लासीफाई करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को. और उसी में ये रॉबर्ट वाइटेकर की जो 5 किंगडम है वो भी हम एकोमोडेट करेंगे. Will accommodate these 5 kingdoms of Robert Whittaker in the general classification or initial classification of living organisms. So living things are classified on the basis of cell. Living things are classified on the basis of cell they have. First of all we'll see types of cell. You know that lower class में आपने पढ़ा होगा. You know that there are 2 types of cell. Types of cell. Types of cell. You know that there are 2 types of cell. There are 2 types of cell. That is simple prokaryotic cell and well developed or advanced eukaryotic cell. So there are 2 types of cell. There are 2 types of cell: simple prokaryotic cell and advanced or well developed eukaryotic cell. So there are 2 types of cell: simple prokaryotic cell and advanced eukaryotic cell. ठीक है. So cells are of 2 types. Cells are of 2 types: simple prokaryotic cell and advanced or well developed eukaryotic cell. देखो प्रो का मीनिंग होता है, व्हाट इज मीन बाय प्रो? प्रो मीन्स सिंपल. एंड कैरियोटिक, कैरियोटिक ये वर्ड आया है कैरी ऑन से. कैरी ऑन का मीनिंग होता है न्यूक्लियस. सो प्रो मीन्स सिंपल, कैरियोटिक वर्ड आया है कैरी ऑन से. सो व्हाट इज मीन बाय प्रोकैरियोटिक सेल? Simple nucleus cell, means cell having simple nucleus. So pro means simple. Pro, what is the meaning of pro? Pro means simple. And carry on means nucleus. So the cell which having simple nucleus is called prokaryotic cell. The cell which having simple nucleus is called prokaryotic cell. Now what is meant by eukaryotic cell? U means advance, and again carry on means nucleus. So what is eukaryotic cell? The cell having advanced or well defined nucleus, that is carry on, is called as eukaryotic cell. सिंपल है, जिस सेल में सिंपल या प्रिमिटिव न्यूक्लियस रहेगा वो प्रोकैरियोटिक सेल, और जिस सेल में वेल डिफाइंड या एडवांस न्यूक्लियस रहेगा उसे कहते हैं यूकैरियोटिक सेल. But these are not the complete definition of prokaryotic and eukaryotic cell. So the complete definition of prokaryotic and eukaryotic cell is studied in next video.
हम कंप्लीट डेफिनेशन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसी वीडियो में हम सेल की बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन हुआ है लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का वो क्लासिफिकेशन भी देखेंगे, और उसी क्लासिफिकेशन में हम एकोमोडेट करेंगे रॉबर्ट वाइटेकर के 5 किंगडम सिस्टम को। ठीक है ना।